Okay, good afternoon, students. We will start with the class now. So, see, students, we have studied about the concept of channel capacity, all the entropy. So, numerical will be based on that topics only. ठीक है, capacities हमने देख लिया था. Any doubt if you have, you can ask me. The channel capacity per second, channel capacity per symbol we have discussed. Depending on the numerical, you can find out the parameter. ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक हमने शायद द कैपेसिटीज ऑफ स्पेशल चैनल्स में फर्स्ट लॉसेस चैनल्स वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, सेकेंड वाज डिटर्मिनिस्टिक चैनल. ठीक है, नाउ वी विल मूव लिटिल बिट फास्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक. फॉर अ डिटर्मिनिस्टिक चैनल सी एच ऑफ y by x should be 0. Is it audible, students? The screen is visible. Screen is visible to all? No. Okay. Just wait, I will again. Is it visible now? Is it visible now? Okay. So for deterministic channel, h of I by x is equal to 0 for all input probability p of xi. ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? In that channel capacity is a maximum mutual information. ठीक है, so here mutual information का फॉर्मूला हम सबने देख लिया था पिछली क्लास में, and we get here h of y only because the second term is 0 minus we had this h of y by x. So now this mutual information is only h of y. It depends on the output entropy only. Okay. Now the information transfer is equal to the output entropy. So the channel capacity per symbol will be given by CS. And CS is equals to maximum mutual information. ठीक है students, that is given by maximum h of y for some set of probability p of xi, which is given by log n to the base 2. So this is the channel capacity for deterministic channel. Okay. So next we are having noiseless channel. I am writing in short, you can write the full form. Noiseless channel. Since NC is both LC and DC, we all know. ठीक है ना, it is a combination of both. So here the mutual information will be given by both input entropy or output entropy. It could be anything. Okay, so channel capacity per symbol CS is given by log m to the base 2 or log n to the base 2. In any way you can find out. Okay, now we will discuss with the next channel, that is my binary symmetric channel. Okay, you all learned the channel diagram now. It's very easy. Okay, we have studied all the concepts also for this. This is my BSC channel. X1, X2, Y1, Y2. Okay, these are the probabilities. और Q क्या है इसमें तुम्हारा? 1 minus P. It's Q is 1 minus P. Okay, so here see, generally in exam they give you to find out the maximum channel capacity of BSC channel. So you have to follow all the steps over here. Yes, few students are waiting in the lobby. I admitted. Please inform others also, as we have just started with the class. Okay students, so BSC channel की मुझे channel capacity find करनी है. ठीक है, so here I know channel capacity is maximum mutual information. This is the formula we have written. ठीक है, for some set of probability p of xi. So here first of all I have to find mutual information.
and we all know the formula. See students, derivation you have to do by your own. I am just giving you the steps to find out BSc channel. ठीक है, और CS का फॉर्मूला हम सबको पता है, ठीक है, which is this formula. Okay, now I will tell you the last formula for channel capacity of this. So it is given by CS is equals to, this is the formula we will get after simplifying all these parameters. And generally in exam they ask this thing. ठीक है, HY we all know that is log n to the base 2. ठीक है, this is the formula which you have to remember, and see this will change as this probability will change. If in exam some other name of probabilities are given, accordingly this equation will change. So what are the steps I will tell you, ठीक है, and you have to simplify it by your own. म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की इक्वेशन मैंने लिख दी है, ठीक है. जनरली व्हेनेवर अ चैनल डायग्राम इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ठीक है, विच एंट्रोपी वी कम टू नो, हमें कौन सी एंट्रोपी पता होती है, एच ऑफ एक्स बाय वाई या एच ऑफ वाई बाय एक्स, कौन बताएगा? विच एंट्रोपी वी कम टू नो थ्रू द चैनल डायग्राम? यस, रिप्लाई फास्ट स्टूडेंट. इट इज, you can speak out also, no issues in that. Yes, h of y by x. Very good. So generally I will take this formula only because I know h of y by x. So here h of y find करने के लिए I need p of y. ठीक है, but never p of y is mentioned in the question. Always it will be p of x. So we have to mix and match and we have to find all the values. So p of x given है, नहीं है, so you have to assume. So here I am assuming the input values as alpha and 1 minus alpha. You can take any values, ठीक है, but it will be 1 minus only. Whatever is the first value, 1 minus will be the second value, as overall input probability total should be 1. Okay students, so p of x I got as alpha 1 minus alpha. Then I'm having the other value which is given in my question is p of y by x. I can write the channel matrix. Here I have taken q as that, na? So you have to write p 1 minus p, here 1 minus p, p. Okay, this is a one way. P 1 minus p, p 1 minus p, p. Okay, depending on this value, it could be like you can mention p की जगह यहाँ मेरा equation हो सकता है. I'm using different color pen so that you should not get confused. This value is mentioned. Otherwise, we can take 1 minus p as this value. So next value will be my p. ठीक है, यहाँ पे p हो जाएगा और यहाँ 1 minus p, कुछ भी हो सकता है. इस केस में मेरा मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 minus p, p 1 minus p. Okay, so this will be the value. Anything you can take here right now. उसके बाद क्या करोगे? p of y, you can write down the steps. I'm changing the screen, student. So now what I will do, I will find p of y because I know p of x and p of y. Sorry, p of y by x. So I will get this value. Okay, again it will be a row matrix of two values. Then you can find out p of x comma y. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज है. ओके, एंड आई नो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ इक्वेशन एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ वाई बाय एक्स. तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगी? एच ऑफ वाई. ठीक है, आई विल फाइंड आउट एच ऑफ वाई की इक्वेशन फाइंड कर लूंगी मैं. यू नो द फॉर्मूला. ठीक है, उसके बाद और एच ऑफ वाई हम क्या कह सकते हैं कि एच ऑफ वाई की मैक्सिमम वैल्यू है log n टू द बेस 2. ठीक है, which is always 1. ठीक है, which is always 1. Or you can find out also if in numerical terms you can find out. After that you will find out h of y by x. इसका equation सबको पता है. It is with double summation. p of x comma y log p of y by x. ठीक है, जिसने मेरी पिछली क्लास अच्छे से अटेंड की उसको ये सारे कंसेप्ट क्लियर है.
So I will simplify this equation. I will get equation in terms of alpha 1 minus p. I will get a long equation over here. Log 2 1 minus p. I will simplify the summation. Okay? It's very easy. You will get 4 terms over here. Okay? You continue terms you will get over here. Now you have to solve this equation, and at last, after solving this equation, you can write the steps. You will get, or leave the space blank, you will get minus log p to the base 2 minus 1 minus p log 2 1 minus p. This is my h of I by x value. Okay, this is my final value of h of y by x. ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है I of x कोलन y. तो h of y क्या है मेरा 1, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, 1, then minus h of y by x. So I will get log p2 plus 1 minus p log 2 1 minus p. Okay students, so this is my final value of channel capacity. So these are the steps. Numerical can be asked based on this channel capacity formula. So have you noted down, student? Should we move ahead? Yes or no, students, please reply. Okay, so next, see, you can write some questions based on this. First question, please write down. For a lossless channel, show that h of, see, this is simply your assignment which you can write in your copy at last pages. First assignment, okay, h of x by y equals to 0. This you have to prove. Second, verify the equation. You have to prove these equations. ठीक है, कैसे prove कर सकते हो students? See, here whenever proof is asked, either you can prove this to this, or you can add these two things to prove this. So you can go any way out. h of x by y का probability में equation लिख के उसको split कर सकते हो और दोनों term से match कर सकते हो, और otherwise ये दोनों को add करके तुम इसको prove कर सकते हो. ठीक है, next, third, verify I of x colon y is equal to I of y colon x. Very simple theoretical proofs are there, and students, you have to learn this proof. Some proofs you have to learn. Okay. And one question I think for proof I have given you already. For mutual information, I of x colon y. ठीक है, वो भी तुमको इसी में कर सकते हो proof. Now write down numerical. Question number 1. Given channel diagram with input probabilities P of x1 is equal to 0.3, P of x2 is equals to 0.5, P of x3 is equals to 0.2. So student, how many inputs are there? Yes, students, how many inputs are there? Who is waiting in the lobby? Any other? Okay. So how many students? Very good. 3 inputs are given. ठीक है? Calculate. Write down in the question. Calculate. Part A.
First, entropies of system. Entropies, oh my god. Entropies of system. Part 2, mutual information transmitted in communication system. ठीक है, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन कम्युनिकेशन सिस्टम. See students, you draw it proper, okay? I'm trying my best to draw. Draw this diagram, students, in your copy. General, these probabilities are always given to you. Point क्या है पहली? 0.3 I think. 0.5 then 0.2. ठीक है students, finished? So now see, input probabilities are always mentioned, output probabilities will be never given to you in the question. You have to find. ठीक है, तो input probabilities given है. ठीक है, you can check that sum of all these input probabilities is 1. ठीक है, so now how you will find out? क्या क्या चीजें हमें फाइंड करनी है? हाँ स्टूडेंट्स, yes students, are you attentive? So what is the first step in this numerical? How you will move? Who can tell? Yes, Jaya, are you attentive in the class? Yes, Jaya, I am talking to you. Are you there in the class? Turn on your mic. Okay, what are you doing? Tell me. And what other students are doing? Okay, tell me what are the steps to simplify this numerical? No issues, but tell me what are the steps to simplify this numerical? You don't know how to simplify this numerical? And you are continuously distracting the minds of students. वैसे भी many students are very much irregular in the classes. So, okay, any other student can tell me what we will do in this numerical? Yes, Aditi, Charu, Pratibha. क्या करना है इस न्यूमेरिकल में? आई थिंक कुछ बच्चों ने शुरू भी कर लिया होगा.
तो फाइन, यस अमीशा, वेरी गुड. So all have written the channel matrix in this. सबने लिख लिया अपने आप channel matrix, yes or no? So you have to be more interactive. Yes. So next step is to find p of x is given to you. Okay, very good. उसके बाद h of x सबसे पहले फाइंड कर लो इस न्यूमेरिकल में. h of x की वैल्यू आ गई है तो प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. और p of y by x सबने लिख लिया है, दैट इज रियली वेरी गुड. This is the channel matrix which is 3 cross 3. ठीक है. इसके बाद ये स्टूडेंट p of x का मैट्रिक्स गिवन था, यू कैन राइट, देन यू कैन फाइंड h of x. सबसे पहले जनरली हम h of x ही फाइंड करते हैं बिकॉज दैट इज गिवन टू यू. तो क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स h of x की? प्लीज टेल मी फास्ट. आता है सॉल्व करना या शुड आई टेल यू द स्टेप्स ऑन द स्क्रीन? See, please students, be on time. You are continuously disturbing the class. So please be on time. It's my humble request to all of you. Yes, student, h of x किसी का भी नहीं आया, नहीं आता है फाइंड करना. Not a single student in the class. Okay, I will wait. Others, do you know the formula? Other students, you have prepared your copies. Okay, karo, fine karo, it's okay. I will wait. But those who don't know the formula even, I will write the formula for those students. जिसको नहीं आता है बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लिख लो और बाकी सब मुझे कैलकुलेट करके वैल्यूज बता दो. सो हाउ यू विल राइट, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे. 0.3 क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कौन बोल रहा है? अमीशा मैम, मुझे हो रहा है कास्केड मैट्रिक्स. See, this is not a cascade matrix. This is not a cascade matrix. That means कहीं तुमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है. मेरे वीडियोस अच्छे से देखो, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. दिस इज नॉट अ कास्केड मैट्रिक्स. ओके, कास्केड में this is a single channel. 2-3 channels are cascaded together. This is a single channel from one input to output. ये क्या है? ये एक सेक्शन है इनपुट का. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ ना. X transmitted to Y, just one set of communication. First, if I'm having second set, this is my cascaded channel. तो X से Z में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकती हूँ. ठीक है, दिस इज माई कास्केड चैनल. हियर जस्ट अ सिंगल चैनल इज देयर. ठीक है. अच्छा, किसी का आंसर नहीं आया? एक का भी आंसर नहीं आया? सी, व्हाट इज द इजीएस्ट? आई विल गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक्स टू सिंप्लीफाई दिस. log 2 to the base e 1 में हमेशा कॉमन निकाल लो और उसकी वैल्यू हमेशा याद रखो. ठीक है ना? रिमेंबर दैट वैल्यू टू फाइंड द आंसर. दैट then it will become very easy to you.
because you will get 1 upon log 2 to the base e everywhere in all this ratios. सी स्टूडेंट यहाँ पे भी आएगा log 2 को कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे भी आएगा 2 को कन्वर्ट करोगे और यहाँ पे भी 2 को कन्वर्ट करोगे. तो ऑलवेज यू विल हैव दिस रेशियो विद यू. सो इज इट क्लियर स्टूडेंट? शुड आई मूव अहेड? ओके, तो आंसर तो बताओ कोई. एक भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं बताया बेटा. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. किसी का भी नहीं आया एच ऑफ एक्स? Yes, the first answer came from Aditi. Very good. चारू थर्ड डिजिट भी लिखो ना बेटा. थर्ड डिजिट क्या आ रही तुम्हारी प्रतिभा? 1.482. Okay, all are getting 2 bits per symbol. So yes, very good students. Really happy to share that many students have answered the question. 1.482 सबका जनरल यही आ रहा है बिट्स पर सिंबल. चेंज हो सकता है, ठीक है ना, सबका सेम नहीं आ सकता आंसर. 2 की जगह 3, 4. सो दैट्स वेरी गुड. जिनका भी आंसर आया है, मूव अहेड. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सी वी हैव टू फाइंड द एंट्रोपीज. मींस ऑल द एंट्रोपीज वी हैव टू फाइंड. ठीक है ना, जो जो फाइंड करना है वो टर्म्स हम साइड में लिख देते हैं. एच ऑफ एक्स के बाद मुझे एच ऑफ वाई फाइंड करना है. ऑल द एंट्रोपीज आई हैव टू फाइंड. ठीक है, उसके बाद मुझे फाइंड करना है एच ऑफ वाई बाय एक्स, देन एच ऑफ एक्स बाय वाई, देन एच ऑफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है. So all these parameters you have to find. So for all these parameters, first we should know all the probabilities. ठीक है. इसके लिए मुझे p of y चाहिए, इसके लिए मुझे p of x, y चाहिए, इसके लिए मुझे p of x by y और ये भी पैरामीटर चाहिए. दोनों पैरामीटर्स आई वांट टू फाइंड h of x by y. हियर आई वांट ओनली p of x, y. तो एक एक बार मुझे सारे पैरामीटर्स फाइंड करने हैं. ऑल द प्रोबेबिलिटीज आई हैव टू फाइंड एंड मैक्सिमम फॉर्मूलाज यू ऑल नो वेरी वेल. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड p of y. कैलकुलेट इट. इसकी वैल्यूज मैं बता देती हूँ, ठीक है, but you have to do it by your own. So p of y value is coming out to be 0.18, 0.66, 0.167. This is my values. Okay, I have calculated by calculator. Then joint probability p of x comma y. We will find by this formula. This you should know. इसको हमने पहले भी सिंप्लीफाई किया है. ओके स्टूडेंट्स, नथिंग इज न्यू. सो हियर you will get the matrix value as bear with my writing students. I am trying to improve day by day. Okay, ये आ गया. ठीक है. Now the remaining probability is p of x by y, because I know p of y by x which was mentioned in the. So here I can use the Bayes rule. ठीक है. और whenever I am having joint probability, see this joint probability I have, तो मैं क्या कर सकती हूँ, joint probability मुझे पता है, इसमें मैं p of x को डिवाइड कर दूंगी, p of x को मैं डिवाइड कर दूंगी तो I will get, सॉरी, p of y को मैं डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट p of x by y. गेटिंग माई पॉइंट.
इस पूरे मैट्रिक्स से मैंने p ऑफ y डिवाइड कर दिया है, तो आई विल गेट p ऑफ x बाय y. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में दिस इज माय फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. ठीक है, द फॉर्मूला विल बी p ऑफ xi कॉमा yj अपॉन p ऑफ yj. j की वैल्यू वैरी कर दी 1 2 3. सो नाउ I will get this conditional probability matrix by dividing 0.18 by 0.18. ठीक है students, this is a direct way. Another way you can find out, no problem in that also. p of x comma y से p of x diagonal को divide करोगे तो भी तुम्हें p of y by x, p of x y diagonal लिख के यहाँ पे p of x by y भी लिखोगे तो भी उससे भी मिल जाएगा. ठीक है, so here I will get the value as 1. Second value 0.12 divided by 0.66. You can find out student, it is coming out to be this. I'm using my calculator. Then this will be 0 0 value, so as it is ही रह जाएगी, कोई change आएगा ही नहीं. ठीक है, then 0.5. This 0.5 will be divided by 0.66. You will get, you can use your calculator students. ठीक है, उसके बाद 0.04 को डिवाइड करोगे 0.66 से, you will get 0.0606. 0.16 will be divided by 0.167. ठीक है, it will come out near about to be 1. So this is my P of x by y, which is a channel transition matrix, or you can say it as a conditional probability. अब क्या करना है इसके बाद, ये सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है. सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यू कैन फाइंड इट आउट. यस स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल तो अब सब कर लेंगे. ठीक है, इसके बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. ठीक है, वी हैव टू फाइंड म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, गिवन बाय I of x colon y. कोई भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हो. देयर आर टू फॉर्मुलीज, वाइस वर्सा फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर. You can use any one and both should come out to be same. कैसे भी फाइंड करो, वो जनरल सेम आना चाहिए. ठीक है, so h of y by x is the average information with destination when already symbols are transmitted. ठीक है, h of y by x, y मैंने रिसीव कर लिया है. ठीक है, जब x ट्रांसमिट हो चुका था. h of x is the actual information to be transmitted. h of y is the actual information with destination. So these two are my transition entropies. ठीक है, if both this mutual information were equal, then we conclude that whole information is transmitted, that is maximum information conveyed. ठीक है, तो ये आता है, that means 100% information is transmitted. ये दोनों को सिंप्लीफाई करके, ठीक है, दोनों सेम आएंगे, that means 100% information is conveyed. And when we will achieve this condition, when this conditional entropies are zero, जब ये दोनों एंट्रोपीज लगभग जीरो के पास होगी, तभी मुझे h of x h of y मिलेगा. ठीक है ना, if these are near about to be zero, ठीक है, then only I will get this condition. If they are not equal, then it indicates that there is some loss of information. Clear students? So this finishes this numerical. Now you can write one more numerical for your homework. Write down a binary channel matrix is given by very easy numerical I am giving you. A binary channel matrix is given by this.
P of x is given by 1 by 3, 2 by 3. Determine h of x, h of y, means all the entropies you have to find. ठीक है? This you have to find. Then write down one numerical. Find the channel capacity. Find the channel capacity of BSC of BSC of BSC shown in figure. See, this is single BSC channel, okay, not cascaded. एक cascaded का भी देख लेते हैं फटाफट से. ये है given तुम्हें. So find the channel capacity of the BSC channel shown to you. Here, after finding out the equation, you have to assume, students, that for a given PE, ठीक है, equation, take the input probability alpha as 0.5 and then simplify it. You will first find out the equation and then simplify it. If you have any doubt, student, you can ask. Write down one more question. A binary data source has P0 equals to 3 by 8, P1 equals to 5 by 8, and inter-symbol interference extending over groups of two successive, I'm writing also, symbols such that P of 1 by 0 is equal to 3 by 4 and P of 0 by 1 is equal to 1 by 16. Calculate the conditional entropy. Calculate the conditional entropy and calculate conditional entropy and compare with H max. H max क्या होगा इसमें students? Log 2 to the base 2 because 2 inputs and 2 outputs are there. So any doubt you want to ask? Cascaded channels भी बहुत easy होते हैं. Simplification is also very easy. It's not that tough. Just 2 channels will be cascaded. So you can find out the overall values also for that. अब तुम्हारे आंसर्स मैं बता दूंगी, ग्रुप में दे दूंगी. अगर तुम्हारे किसी के आंसर्स आते तो जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट्सएप पे मैसेज करना तो मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका.
So this finishes your class, and this will be the overall syllabus of your midterm. So goodbye students, and all the good luck, and thanks for attending the class. So we'll stop our class over here. Goodbye and take care. All the best for your second midterm.